A very good morning to all. Now we started our chapter second, that is the internet services and mobile technologies. About the internet, we have already studied in chapter first that what is internet. तो इंटरनेट के बारे में अगर हम बात करें तो इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, और क्या कह सकते हैं हम, इट इज अ कंप्यूटर बेस्ड नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन नेटवर्क विच इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर नेटवर्क्स. इट मीन्स कैसे हम इसको डिफाइन करें कि एक बड़ा यहाँ पर देखिए कि एक नेटवर्क यहाँ पर एक क्रिएटेड है, ठीक है, and all these systems are connected to each other. Here is also a network. These systems are connected to each other, and when such type of several networks are connected to each other, then it creates a network, internet. When all such type of small networks are interconnected to each other, then it makes a large network that known as a internet. Okay, so internet is network of networks. Okay, so whenever we think about the internet, जब भी हमारे दिमाग में आता है कि इंटरनेट, तो इट मीन्स कि इंटरनेट को हम कैसे यूज कर सकते हैं. इट मीन्स कि हम इंटरनेट की हेल्प से क्या क्या इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं. ओके, सो व्हेनेवर वी थिंक अबाउट द इंटरनेट, वी थिंक अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन, अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज दैट वी कैन एक्सेस ऑन आवर स्मार्टफोन्स, डिवाइसेस और laptops and computers. Okay, so with the help of the internet, we can send the mails, we can do video conferencing, we can do active on social networking websites. We can do chat, and we can retrieve the information on any subject, on any topic with the help of the internet. So the services that are available through the internet are also diverse, as the peoples are interested in the diverse information. तो कहने का मतलब ये है कि जितने टाइप के लोगों की रिक्वायरमेंट है कि वो किस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहते हैं, उतने ही टाइप की डाइवर्स इंफॉर्मेशन इंटरनेट हमें अवेलेबल कराता है. Okay, it means some of the peoples want to access textual information. Okay, some of the people wanted to access the video information. It means कि जितने डाइवर्स लोगों की रिक्वायरमेंट है, इंटरनेट हमें उतनी ही डाइवर्स टाइप की इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराता है. ओके, and what type of services that commonly we can access with the help of internet. So some of the services we can access, like we can search the desired information, whatever the information we want to access, we can easily search on the internet. कोई भी information अगर हम access करना चाहते हैं, आप कह सकते हैं, if we want to search any information, then we just simply search on a web browser. We can do emailing. Okay, in this modern time, we are not hanging on the old way of communicating via writing a lot of large letters on our papers. Now we are modern, and we people are using the emails, a best or the मोस्ट यूज सर्विस ऑफ द इंटरनेट. आपने देखा होगा कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने एम्प्लॉयज से कम्युनिकेट करती हैं विद द हेल्प ऑफ द ईमेल्स. दे आर नॉट गोइंग टू राइट द हार्ड कॉपीज, वो ईमेल्स के थ्रू उनसे कम्युनिकेट करते हैं. ओके, सो ईमेल्स बीइंग अ मोस्ट important services of the internet that is used a lot of people's. Next, video conferencing.
in the organization, if the organization have a many offices around the globe, then it is not possible to all the peoples to move in few time to the main head office. What they do? They just do video conferencing, just be in their offices and whatever the place they are. Okay, it means कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन को मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, कोई मीटिंग किसी चीज के ऊपर करनी है और उसके ऑफिसेज वर्ल्ड में कहीं पर भी सेटअप हैं और सारे लोगों को एक समय पर वहां पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर मीटिंग उनके बिना किसी के कहीं जाए अगर हो सकती है, देन इट्स अ मोस्ट बेटर कि बिना आपके कहीं जाए और आप उस काम को घर रहते हुए कर पाए. ओके, सो with the help of the video conferencing, it is possible that they are talking to each other, they are seeing to each other. Okay, so with the help of the video conferencing, we can save our time, we are saving our money. Okay, it's also a new emerging way of communicating with the peoples through the internet. Next is uploading and downloading. Most of the peoples using this service of the internet. Whenever we are listening to any song, we just quickly download it so that we can listen it after. बहुत सारे लोग इस सर्विसेज को यूज करते हैं कि अगर आपको कोई सॉन्ग पसंद आ रहा है, कोई इमेज आपने देखी, तो आप उसको चाहते हैं कि वो हमारे पास ही हमारे डिवाइस में, हमारे स्मार्टफोन में, हमारे लैपटॉप में हम उसको सेव कर लें और बाद में फिर उसको हम एक्सेस कर सकें. तो उस फाइल को अपने सिस्टम में वेब सर्वर से अपने सिस्टम में सेव करना, दिस इज डाउनलोडिंग. इसके बारे में हम आगे एक प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो मैं आपको क्लियर करूंगा. तो दिस इज डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग. वी ऑल नो वेरी वेल, मोस्ट ऑफ अस आर एक्टिव ऑन द सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट. बहुत सारे हम लोग सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पर एक्टिव हैं और वहां पर फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम. नाउअडेज अ वेरी फेमस ऐप विच इज मोस्टली यूज्ड बाय द पीपल इज टिकटॉक. बहुत सारे लोग उस पर एक्टिव हैं. एंड ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द लॉकडाउन, हाउ वी कैन स्पेंड द टाइम? सो द पीपल आर स्पेंडिंग टाइम बाय मेकिंग द टिकटॉक वीडियोज. वो लोग अपनी टिकटॉक वीडियोस बना रहे हैं एंड हाउ दैट वीडियो इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल बाय द सर्विस ऑफ अपलोडिंग. वो लोग क्या करते हैं कि अपनी एक वीडियो शूट कर ली डिवाइस के ऊपर और इंटरनेट से कनेक्ट होकर के वो चीज अवेलेबल हो गई. कहां पर? ये डिवाइस हो गया मोबाइल फोन और ये हो गया हमारे पास वेब सर्वर. और व्हेन द थिंग इज सेंडेड saved on this web server from the device, then after the person who are accessing this web server, ठीक है, और वो चीज फिर बाकी लोगों को अवेलेबल हो जाएगी. So this is uploading and downloading. Next service is chat with the help of the WhatsApp. और कुछ और भी सर्विसेज हैं like Facebook Messenger, Gtalk. These are some of the services that are provided by the internet. कि ये हम लोग चैट जो टेक्सचुअल मैसेजिंग करते हैं, दिस इज द चैट. नेक्स्ट इज पार्टिसिपेट इन डिस्कशन फोरम्स. बहुत सारे ऐसे डिस्कशन फोरम्स हैं जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं एंड पुट आउट देयर व्यूज अबाउट व्हाट इज डिस्कसिंग एट द टाइम. जिस समय जिसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है हम उसके अंदर अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रख सकते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूज ग्रुप्स. सो दीज आर द सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट. ओके, एंड दीज आर ऑल सर्विसेज आर आल्सो नोन एज द वेब सर्विसेज. वेब सर्विसेज क्या है? वेब सर्विसेज आर द सर्विसेज दैट टेक्स प्लेस between the two devices, that is first
the client device and another is web server, and the communication between both of them with the help of the internet through HTTP protocol. लास्ट चैप्टर में हमने देखा व्हाट इज HTTP and HTTPS. The work of HTTP to make the communication between the client and the server. The work of the HTTP is to transfer the information from web server to the client device. Okay? Or HTTPS is a secure transfer of information. कुछ ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस होती हैं कि वो नेटवर्क पर अगर किसी हैकर के थ्रू वहां पर एक्सेस कर ली जाए तो देन देयर इज अ लॉस फॉर अ क्लाइंट हु इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क. तो देयर इज अ HTTPS network protocol that is used to access the secure communication. So these are all the web services. Next is आता है कि what do you mean by net surfing? Net surfing क्या है? We are just simple access the internet. We are just looking out the web pages, looking out the information. So whenever we are doing such type of activity, it is known as net surfing. जब भी हम नेट ओपन करके और उसके ऊपर वेब पेजेस को एक्सेस कर रहे हैं, कोई वेबसाइट को देख रहे हैं, इट इज सिंपली नोन एज नेट सर्फिंग. ठीक है. नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन रिट्रीवल. As we know, a web server contains a lot of information. Okay, so whenever we are connecting to a web server with the help of the internet, we can access lot of information. It means when we are getting information from the web server to our device, it is known as the information retrieval. आप देखें कि एक वेब सर्वर है जिसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है, और जब कोई सिस्टम इस वेब सर्वर से कनेक्ट हो रहा है तो इट मीन्स द क्लाइंट इज सेंडिंग द रिक्वेस्ट टू एक्सेस some type of information, and according to the request the web server sending the response. Okay, so it means कि यहाँ पर क्लाइंट सर्वर से some type of information को रिट्रीव कर रहा है, और जब वो वहां से वेब सर्वर से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर लेगा, इट मीन्स इट इज द इंफॉर्मेशन रिट्रीवल. ठीक है. ओके. So to get the information from the web server, we need we have to fulfill some of the requirements. Like firstly, we have to be connected to the internet. पहले हमें अपने डिवाइस पर इंटरनेट को एक्सेस करना है. Then after there is some type of web browser is installed in our system, in our device. Then open the web browser. Whatever the web browser is installed in your device, then write the URL of any website. आप जो भी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहते हैं, you have to write that URL. Okay, and when that website is open on the web browser, you can access the information. There it is, uploading and downloading, two things. Whatever I had explained before, here it comes. Okay, आप एक बार इनको देखिए, समझिए, then after we discuss about uploading and downloading.